Optical instruments. देखिए बेटा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को समझने के लिए फर्स्ट वन वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय विजुअल एंगल. What do you mean by visual angle? Visual angle is nothing but what? Angle made by the object. मान के चलो, this is your eye, this is your axis, and this is your lens. ये जो black वाला होता है ना वो वाला. This is your lens, like convex lens, and this one is your retina. If an object is kept in front of this one, this is your object. The ray of light is being incident on this one like this, and another ray of light is passing through the optical center. इसका image इस पे गिरेगा यहाँ पर. This is called as of your retina, isn't it? So this is the height of object, and this is nearer to the eyepiece. So the angle made by this one is alpha. This angle is known as of your visual angle, beta, represented by alpha. तो फॉर्मूला बताओ. फर्स्ट फॉर्मूला जो याद रखना अपने को, tan alpha is equals to h naught divided by, this is at least distance of distinct vision, that is nothing but capital D. As angle is very small, visual angle is always equals to height of object divided by minimum deviation. Am I clear with this one? First definition जो याद रखना है अपने को, visual angle. Visual angle is nothing but angle made by the object in front of your eyepiece. That is given by the formula tan alpha is equals to h naught divided by d. D is known as of what? Minimum distance of distinct vision, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 25 centimeters. And also I can say that height of your image or height of your object is directly proportional to your visual angle. Is directly proportional to your visual angle. Am I clear with this one? Am I clear? Yes, sir. तो पहला इंस्ट्रूमेंट कौन सा बेटा? आपने को जो सुना था बेसिकली बताइए. व्हाट इज द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट? माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप में कौन सा? दो माइक्रोस्कोप से सिंपल है, और एक वन इज राइट नाउ फॉर मी कंपाउंड. चलो पहला वाला समझ जाते हैं पहले. First one is simple microscope. Simple microscope. Or it is also called as, what is the other name for this one? Magnifier. It is also called as of what? Magnifier. कितने lenses use करते हैं बेटा इसमें? We are using one convex lens, जिसका फोकल लेंथ क्या होता है? पॉजिटिव, isn't it? So इसमें क्या कर रहे हैं? We are taking one convex lens like this, and this is your principal axis, and we are keeping the object in front of this one यहाँ पर. This is your size of object h naught, this is A and this is D. Object is in between focus and optical center. Object कहाँ पर रखा है बेटा? In between focus and your optical center. यहाँ से यहाँ तक इसका distance जो है, this one is called as of your eyepiece, isn't it? तो इसका distance लेते हैं अपन UV, object distance from your eyepiece. Ray diagram इसका देखिए बेटा. A ray of light from this one is incident on this one like this. It will get refract and will go like this. Another ray of light will go from the optical center without any deviation, ऐसा कुछ. And your eye is somewhere here and you are seeing from here. अगर मैं इसको extend कर रहा हूँ, it is seen somewhere here, right? इसका image कहाँ पर गिरा? यहाँ पर. This is your size of your image. That this is the angle made by your image. उससे पहले अपन क्या फॉर्मूला याद रखना है बेटा? मैग्नीफाइंग पावर.
मैग्नीफाइंग पावर या मैग्निफिकेशन बोलो, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। याद है मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला बेटा फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप, कॉम्पाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप्स के लिए कैपिटल एम इज ऑलवेज इक्वल्स टू, कैपिटल एम इज इक्वल्स टू योर विजुअल एंगल मेड बाय व्हाट, इमेज। जैसा मैग्निफिकेशन लिखते हैं साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सो दिस वन इज आल्सो योर विजुअल एंगल made by object at least distant of distinct vision, यानी कैपिटल D, यानी कैपिटल M is equals to tan beta divided by tan alpha। by default आपको याद रखना है बेटा, magnification is equals to your angle made by the image divided by angle made by the object। RM is equals to, as angles are very small, I can write this one as beta divided by alpha। अल्फा का तो वैल्यू मुझे मालूम है, अल्फा बाय डिफॉल्ट क्या होता है बेटा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय कैपिटल डी, इजंट इट। नाउ यहां पर देखो बेटा, एंगल मेड बाय द बीटा इज एंगल मेड बाय द इमेज, तो इसमें से मैं निकाल सकता हूं मैं यहां पर tan बीटा इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय यूवी, बिकॉज इट इज कैपिटल लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो इसका मैग्निफिकेशन निकाल लीजिए, magnification of the simple microscope is capital M is equals to beta divided by alpha। Beta is equals to height of object divided by UE divided by alpha। Alpha is equals to H naught divided by capital D, and this will be equal to H naught divided by UE into D divided by H naught। H naught will get cancelled, so it is D by your UE। तो for a simple microscope magnification का फॉर्मूला कितना हो गया बेटा, M is equals to D divided by UE। क्या यहां तक क्लियर है सभी को? M is equals to D divided by UE। Is this clear? Any doubt to anyone in this one? Magnification of a simple microscope, M is equals to capital D divided by UE, capital D divided by UE। Am I clear with this one? सर अल्फा क्या है? अल्फा इज द एंगल मेड बाय, यहां पर दिखा ना, बाय डिफॉल्ट आपको याद रखना, विजुअल एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट विद द आई, tan alpha is equals to your height of object divided by least distant of distinct vision। so alpha value is always h naught divided by d, यानी बिना कोई स्पेक्ट्स के आप जो एंगल बना रहे हैं ना ऑब्जेक्ट से, उसको हम लोग विजुअल एंगल बोलते हैं। ओके सर, ठीक है। यस अभी अपन कोई चीज देख रहे हैं, isn't it? You are seeing the laptop, you are seeing the mobile, so angle made by that object with your retina or with your lens, that angle is called as visual angle। डन? यस सर। चलिए, तो सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए आपको फॉर्मूला क्या याद रखना है बेटा फॉर डूइंग न्यूमेरिकल्स, कैपिटल M is equals to D by UV। D is nothing but minimum distance of distant vision and UV is nothing but of your distance of your object from your eyepiece। ठीक है, am I clear? मैग्नीफाइंग पावर क्या है बेटा, व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर फॉर्मूला, M is equals to visual angle made by the image divided by visual angle made by the object। M is equals to tan beta by tan alpha और M is equals to beta by alpha। डन? ये फॉर्मूला जो है ना कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए भी सेम है, टेलीस्कोप के लिए भी सेम है और सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए भी सेम है। मैग्नीफाइंग पावर मतलब एंगल मेड बाय द इमेज डिवाइडेड बाय एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। Am I clear? तो सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए मैग्निफिकेशन कितना होगा, M is equals to D by UV। केस नंबर 1, केस नंबर 1 हम लोग दो केसेस करते हैं बेटा इसके अंदर। वन इज नोन एज ऑफ योर नियर पॉइंट, वन इज नोन एज ऑफ योर नियर पॉइंट और ऑल्सो कॉल्ड एज, व्हाट इज अदर नेम फॉर मी, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन पूछो क्यों? देखो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आप आंख के नजदीक लाओगे मिनिमम डिस्टेंस से भी ज्यादा, तो आप क्या करोगे, अपने आंख खोलोगे कि नहीं, ज्यादा खोलोगे कि नहीं खोलोगे? तो दैट मींस आपके आंख क्या हो रहे हैं, स्ट्रेन्ड हो रहे हैं। सो दैट मींस दिस इज योर स्ट्रेन्ड पोजीशन ऑफ योर आई, दिस इज योर स्ट्रेन्ड पोजीशन ऑफ योर आई। नियर पॉइंट बोलो या मैक्सिमम मैग्निफिकेशन बोलो या स्ट्रेन्ड पोजीशन ऑफ आई बोलो, दे आर वन इन द सेम। एम आई क्लियर? व्हाट इज द फर्स्ट केस बेटा, नियर पॉइंट यानी मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के पास रख रहे हो कोई ऑब्जेक्ट को आप,
तो जब आपकी आंख क्या करोगे बेटा, अगर ऑब्जेक्ट कोई भी नजदीक है आपके पास, बहुत नजदीक है, तो आप अपने दीदे खोलोगे कि नहीं खोलोगे ज्यादा, तो इसलिए मैक्सिमम मैग्निफिकेशन बन रहा है और आपके आंख के ऊपर स्ट्रेन हो रहा है. सो दैट इज रीजन इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ स्ट्रेन्ड पोजीशन ऑफ योर आई. ठीक है ना. Near point or strained position or your maximum magnification. Am I clear? Am I Yes. clear? चलो. Near point मतलब object देखो right now for this one we'll be using the lens formula. Object u is equals to minus of ue और image कहाँ पर बन रहा है बेटा, least distant of distinct vision पे पड़ रहा है और focal length will be equal to plus of your fe. Use the lens formula. 1 by v minus 1 by u is equals to 1 by f. V is equal to how much beta? Minus d. This is minus 1 by u. U is equals to minus of ue. That is equals to 1 by your fe. Yani this one is minus 1 by d plus 1 by uv is equals to 1 by fe. ये डेरिवेशन आपको याद रखने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिख दूंगा, तो वो रिजल्ट आप याद रख लीजिए, लेकिन करने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको यहाँ पर. 1 by ue will be equal to 1 by fe. ये माइनस इधर चले जाएगा तो प्लस हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू d. यानी 1 by ue is equal to how much will be fe plus of your d. और मैं इसमें से ue भी लिख सकता हूँ, ue is equals to your fe into d divided by fe plus d. एलसीएम निकाल रहा हूँ, लिख सकता हूँ ऐसा मैं. सिंपल माइक्रोस्कोप में आप लेंस यूज कर रहे हैं ना बेटा. 1 by v minus 1 by u is equals to 1 by f. This is known as of your lens formula. This one is known as of your lens formula. तो नियर पॉइंट मतलब इमेज कहां पर गिरेगा बेटा, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे गिरेगा. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी इक्वल टू माइनस ए एंड फोकल लेंथ विल बी इक्वल टू पॉजिटिव. अब मैग्निफिकेशन निकालो इसका. मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है बेटा, m is equals to d divided by ue. यानी m is equals to d divided by ue. यानी that is equals to d into 1 by ue की वैल्यू कितनी है बेटा, 1 by fe plus of your 1 by d. तो इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू d divided by fe plus d divided by capital D. ये d और d कैंसिल हो गया, तो मैग्निफिकेशन बना कितना, m is equals to 1 plus d divided by fe. आया. So for near point magnification for the simple microscope कितना बनता है बेटा, least distant of distinct vision पे गिर रहा है तो 1 plus d by fe. Am I clear with this one? Yes, sir. कोई डाउट किसी को? फॉर्मूला बाय डिफॉल्ट आपको याद रखना है बेटा, m is equals to 1 plus d by your fe. फिर से एक बार, मैग्निफिकेशन फॉर द सिंपल माइक्रोस्कोप m is equals to d by ue. m is equals to d by ue. मैग्निफिकेशन निकालने का तरीका, m is equals to your visual angle made by the image divided by visual angle made by the object at least distant of your distinct vision. तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो गया बीटा बाय योर अल्फा. बीटा इज एंगल मेड बाय इमेज, अल्फा इज द एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट. एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट का फॉर्मूला क्या है, अल्फा इज इक्वल्स टू योर h नॉट डिवाइडेड बाय d. डन. तो केस नंबर 1 इज नियर पॉइंट और मैक्सिमम मैग्निफिकेशन और स्ट्रेन पोजीशन. उसके लिए अपन लेंस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, 1 by v minus 1 by u is equals to 1 by f. This is called as lens formula. सिंपलीफाई कर रहे हैं तो we are getting the magnification for that one as m is equals to 1 plus d by fe. Am I clear with this one? Smile. Yes, sir. Fe means? Fe is the focal length of eyepiece. Fe is Sir. the focal length of eyepiece. Fe is focal length of eyepiece. MD is the magnification at your least distant of distinct vision. Capital D is your least distant of distinct vision. D की वैल्यू कितनी होती है by default 25 centimeters. Done. Sir, mu e and fe are different. क्या बोले? Mu e and fe are different. Mu e and fe are different ना बेटा. Mu e is nothing but what? Distance of your object. देखो लेंस से यहाँ पर लिखा है ना. This is ue is nothing but object distance. ये object का distance from the lens. This focal length of this lens is right now for me fe. Okay, sir. ue is the object distance, fe is the focal length. Case number 2 देखो बेटा. What is case number 2? Near point हो गया. The next one is right now for me far point. सबके लिए एक केस होते हैं बेटा. Far point is also called as minimum magnification. Minimum magnification.
बताइए व्हाट इज आवर फार पॉइंट बेटा, आप कहां तक देख सकते हो बताइए, आप कहां तक देख सकते हो? Infinity. Infinite. क्या आप चांद देख सकते हो? क्या आप सूरज देख सकते हो? क्या आप चांद तारे देख सकते हो? कैन यू एबल टू सी द स्टार्स, मून, हेवनली बॉडीज देख सकते हो नहीं देख सकते हो रात के टाइम? कितनी दूरी पे हो? वो ज्यादा दूरी पे है, isn't it? फार पॉइंट फॉर द ह्यूमन आई कितना है? इंफिनिटी। तो जब कोई चीज आप मून वगैरह देख रहे हो तो क्या आपके आंख पे स्ट्रेन पड़ रहा है क्या कुछ? No, sir. Isn't it? No. So that is the reason we are calling that one as what? Minimum magnification, or this is also called as relaxed position of your eye, or it is also called as normal adjustment. It is also called as what? Normal adjustment. Am I clear? This इतने सारे नाम है बेटा फार पॉइंट के। फार पॉइंट के क्या क्या नाम है? फार पॉइंट बोल के बोलो, या मिनिमम मैग्निफिकेशन बोलो, या रिलैक्स्ड पोजीशन ऑफ आई बोलो, या नॉर्मल एडजस्टमेंट बोलो, दे आर वन इन द सेम। क्लियर? मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां पर है? Object distance is equals to minus of UE, because all the distances are to be measured from the optical center. All the distances are to be measured from the optical center. In the direction of the light, it will be positive. Opposite direction to the light, it will be a negative. Image कहां पर गिर रहा है बेटा? Infinity पे. Focal length will be equal to plus of your FE. From lens formula, apply the lens formula right now for me. So lens formula is 1 by V minus 1 by U is equals to 1 by FE. So this is 1 by infinity minus this is minus of your UE is equals to 1 by your FE. ठीक है? और ये 1 by infinity कितना हो जाता है? 0 plus 1 by UE is equals to 1 by FE. Am I clear? Am I clear? Yes, sir. तो यानी UE is equals to किसके बराबर हो गया बेटा? फोकल लेंथ ऑफ आईपीस के बराबर हो गया। आ गया? तो अब मैग्निफिकेशन बताओ। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है बेटा? मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप m is equals to d by क्या था फॉर्मूला? मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल E माइक्रोस्कोप by UE. एक्चुअल फॉर्मूला क्या था? m is equals to d by UE, isn't it? मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप इज UE. UE की वैल्यू कितनी आ गई? FE, यानी दिस विल बी इक्वल टू d by FE, यानी मैग्निफिकेशन when it is at infinity will be equal to d by FE. क्या क्लियर है यहां तक? Yes, sir. तो फॉर्मूले सबको बाय डिफॉल्ट याद रखना है बेटा। Magnification when the image is formed at the far point is given by the formula m is equals to d by your FE. आ गया? फिर से एक बार, कुछ डाउट है क्या? देख लीजिए। देखो सिंपली एक ही चीज याद रखनी है बेटा इसमें। पहले तो सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए और एक नाम क्या है? मैग्नीफायर है। इसमें अपन क्या यूज कर सकते हैं बेटा? एक कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। और ऑब्जेक्ट कहां पर रखते हैं? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अपन ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो इमेज वहीं गिरेगा ऑन द सेम साइड, सो दैट इज योर वर्चुअल। तो इसमें हम लोग क्या याद रखना है? मैग्निफिकेशन ऑफ योर सिंपल माइक्रोस्कोप इज m is equals to d by UE. m is equals to d by UV. तो दो केसेस पढ़ेंगे इसके अंदर बेटा। व्हाट आर द टू केसेस वी आर स्टडीइंग इन दिस वन? वन केस पढ़ेंगे अपन। Sir, हाँ बेटा। sir, magnification is same for all instruments. ऑल इंस्ट्रूमेंट्स मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए भी सेम है ये वाला फॉर्मूला। m is equals to बीटा बाय अल्फा जो है ना, सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए भी सेम होगा और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के भी लिए सेम होगा, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए भी सेम होगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इससे हम लोग डिराइव कर रहे हैं। तो जब मैंने इसको लेके डिराइव किया तो सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए मैग्निफिकेशन कितना आ गया? d by UE। कंपाउंड Yes, sir. माइक्रोस्कोप के लिए डिफरेंट आएगा फिर। Yes, sir. सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए मैग्निफिकेशन कितना है? d by UE। सो नियर पॉइंट मतलब जब नजदीक है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज मैक्सिमम मैग्निफिकेशन और इट इज आल्सो कॉल्ड एज स्ट्रेन्ड पोजीशन ऑफ योर आई। उसके लिए मैग्निफिकेशन कितना है? md is equals to 1 plus d by FE। क्लियर? फार पॉइंट Yes, के sir. लिए, फार पॉइंट के लिए मैग्निफिकेशन कितना है? m is equals to d by FE। Am I clear? Yes, sir. चलिए।
एक क्वेश्चन कर लीजिए जल्दी से। A thin convex lens of focal length 5 centimeter is used as simple microscope. Is used as simple microscope by a person with normal near point, with a normal near point 25 centimeter. Stop. What is the magnifying power? What is the magnifying power of microscope? Magnifying power of microscope. तो केस नंबर 1 आएगा, केस नंबर 2 आएगा, पहले ये बताइए। नॉर्मल Case 1. पॉइंट, नॉर्मल मतलब नियर पॉइंट, नियर पॉइंट के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला कितना है? वेरी गुड, डी बाई एक्चुअल फॉर्मूला क्या है? यूई। Yes, sir. डी इंटू 1 प्लस कितना आएगा? डी बाई एफ ई। Yeah. So what is the formula right now for this one? Magnification is equals to near point के लिए फॉर्मूला क्या है? 1 plus D by FE. हाँ, तो m is it is equals to 1 plus d by fe, and a plus this will be equal to 1 plus d divided by fe. तो m is equals to 1 plus d की वैल्यू कितनी होती है? 25 divided by focal length of your eyepiece is given as of your 5. So 5 ones are 5 5s are 5 plus 1 6. So magnification हो गया कितना? m is equals to 6 आ गया। हमें क्लियर? हाँ, Yes, sir. सर स्ट्रेंड आई नहीं बोला ना सर, तो मतलब 1 प्लस का ट्रेंड फैक्टर नहीं आता। नियर पॉइंट बोला है ना, देखो क्या क्या बोला है, तो क्या क्या नाम आया देखो, इसके लिए मैंने क्या नाम दिया था? स्ट्रेंड अलग नाम क्या है? नियर पॉइंट बोलो, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन बोलो, या स्ट्रेंड आई बोलो, वन एंड द सेम ओनली ना। द इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टेंट विजन। सर नॉर्मल भी दिया ना सर? क्या बोले? नॉर्मल कहाँ नॉर्मल दिया? नॉर्मल नियर पॉइंट बोला है, फार पॉइंट नहीं होता ना। नॉर्मल Yes, sir. नियर पॉइंट मतलब डी की वैल्यू 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना? क्लियर? यस सर। चलो, व्हाट इज द पावर फॉर्मूला बेटा? पावर ऑफ लेंस, पावर इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। Power is nothing but what? Reciprocal of focal length. Unit of this one is what beta? Diopter, डायरेक्टर। represented by capital D. याद है? यस सर। Power is equals to your 1 by F. Unit is diopter, represented by capital D. चलिए एक क्वेश्चन लिख लीजिए इस पे जल्दी से। A simple microscope, a simple microscope is a combination of two lenses in contact, of powers plus 15 diopter and plus 5 diopter. Calculate the magnifying power. Calculate the magnifying power of the microscope. Magnifying power of the microscope. If the final image is formed at 25 centimeter from lens. चलो ट्राई करिए। इसने क्या बोला? A simple microscope is a combination of two lenses. यानी ये दो लेंसेस को ऐसा मिला के मैं एक लेंस बना रहा हूं, ऐसा सिंपल माइक्रोस्कोप।
जिसका पावर कितना है, इसका पावर है P1 इज इक्वल्स टू प्लस 15 डायोप्टर और इसका पावर है P2 इज इक्वल्स टू प्लस 5 डायोप्टर। तो टोटल पावर कितना बन गया बेटा, P effective इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2 that is equals to 15 plus 5 that will be equal to how much, 20 diopter। आ गया। तो कहां पर है मुझे केस बनाएगा, केस 2 आएगा। कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द सिंपल माइक्रोस्कोप when the final image is formed at again what, least distance of distinct vision, यानी मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू 1 प्लस d by fe। यही फॉर्मूला लगाओगे ना। सर वाई? देखो फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड वेयर एट 25 सेंटीमीटर, मतलब क्या, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, नियर पॉइंट ना। यस सर। फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कैपिटल डी पे हो रहा है, नियर पॉइंट। क्लियर है? तो सर अगर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन पे हो रहा तो दैट विल बी नियर पॉइंट। क्या बोले? अगर डी पे फॉर्म हो रहा इमेज तो दैट विल हाँ बी डी पे नियर। फॉर्म हो रहा मतलब कभी भी नियर पॉइंट ही होगा ना बेटा, क्योंकि फार पॉइंट अपना इंफिनिटी है। ओके सर। फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट 25 सेंटीमीटर, आपको कंफ्यूज करने के लिए बोला उसने, इसलिए स्ट्रेन नहीं बोला, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन नहीं बोला, उसने क्या बोला है कि एट 25 सेंटीमीटर मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन मतलब क्या, नियर पॉइंट या मैक्सिमम मैग्निफिकेशन या स्टैंड पोजीशन ऑफ आई। एम आई क्लियर? यस सर। तो मेरे पास कैपिटल डी की वैल्यू है, फोकल लेंथ नहीं है, लेकिन पावर इज इक्वल्स टू व्हाट फॉर मी, 1 by फोकल लेंथ ऑफ योर आईपीस। तो मैं पावर फोकल लेंथ निकालो, सो फोकल लेंथ ऑफ योर आईपीस विल बी इक्वल टू 1 by 20। आ गया? 1 by 20 मींस हाउ मच? फोकल लेंथ किसमें दे रखा, फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट 25 सेंटीमीटर्स। फोकल लेंथ अगर मीटर्स में तो ये होगा, अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर्स में होगा तो 100 डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर्स, isn't it? तो सेंटीमीटर्स में कितना हो जाएगा बेटा, 100 डिवाइडेड बाय 20 होगा ना, 2 1 जा, ये चले जाएगा, 2 1 जा 2 5 जा, सो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी, 5 सेंटीमीटर्स। आया? क्योंकि कैपिटल डी 25 सेंटीमीटर्स में है बेटा, तो फोकल लेंथ को भी आपको सेंटीमीटर्स में लेना है। यहां पर इसकी यूनिट क्या है, मीटर्स में। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10 to the power of 2 centimeters। Clear? 1 centimeter is equals to 10 to the power of -2 meters। तो मैग्निफिकेशन निकाल दो, m is equals to 1 plus d is 20 divided by 5। 5 1 जा, 5 5 जा, 5 plus 1 6। Again the answer is 6। आ गया? यस सर। Any doubt? Any doubt? वन बाई एफ ई, हाँ अगर ये यहाँ पर 1 by एफ अगर पावर में डाल रहे तो कितना बन जाएगा, 1 plus p इंटू पावर आ जाएगा। 1 by एफ इज नथिंग बट पावर, लेकिन ये सेंटीमीटर्स में या मीटर्स में वो ध्यान रख के कन्वर्शन कर लीजिए आप। ठीक है? हमें क्लियर? वेरी गुड। और एक प्रॉब्लम करें, चलिए और एक प्रॉब्लम ट्राई करिए। An object is to be seen through a simple microscope, of power 10 diopter। Okay, where should, आप लोग ट्राई करिए बेटा, where should the object be placed? You can use the lens formula also if required, so as to produce maximum angular
magnification. Maximum angular magnification. Stop. Capital D is equals to 25 centimeters in the bracket. चलो try करिए. Anyone? Sara Nabila, explain one more time. ठीक है बेटा, explain कर दूंगा. ये प्रश्न कर लीजिए. An object is to be seen through a simple microscope of power. Power कितना दे रखा है मेरे पास? Power is equals to 10 diopter. So focal length will be equal to how much for me, beta? That is equals to 1 by p. That is nothing but 1 by 10. Unit will be meters. Centimeters में कितना हो जाएगा बेटा? 100 divided by 10. 10 ones are 10 tens are. ये हो गया 10. So it is 100 centimeters. An object is to be seen through a simple microscope of power 10 diopter. Where should be an object be placed? यानी object distance कितना होगा? So as to produce a maximum angular magnification. मतलब near point की far point. Near point. मैग्निफिकेशन दे रखा है उसने प्रॉब्लम में, नहीं दिया ना. आपने को निकालना क्या? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है. इमेज कहां पर गिर रहा है बेटा? इमेज कहां पर गिर रहा है? Where should an object be placed so as to produce a maximum angular magnification? And image is formed at least distant of distant vision. And V is equals to minus 25 centimeter. That is nothing but minus D. Use the lens formula. 1 by V minus 1 by U is equals to 1 by F. V is equals to minus 25 minus 1 by U. ये मुझे निकालना है. That is equals to 1 by F. 1 by F की वैल्यू कितनी हो गई? 10. कितना आ रहा देखिए? सर आप V minus 25 किलो है. All the distances are to be measured from the optical center ना बेटा. अगर ये लेंस है तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है. ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फ्रॉम दिस ऑप्टिकल सेंटर इज दिस वन राइट नाउ. इमेज कहाँ पर गिर रहा है? 25 सेंटीमीटर पे. रे ऑफ लाइट जा रही है इस तरह से और आप मेजर कर रहे हो डिस्टेंस ऑपोजिट डायरेक्शन. गो टू दिस वन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये. ओके सर. ठीक है ना. तो ये हो गया माइनस, this will be minus 1 by u is equals to 1 by 10 plus 1 by 25. कितना आ रहा देखिए? 1 by u is equals to 1 by 10 plus 1 by 25 कितना आ रहा? माइनस में आएगा. कितना आ रहा देखो? LCM will be 50. Ten fives are 50, 25 twos are 50, and 5 plus 2 and 7. Minus 7 by 50. यानी u की वैल्यू कितनी बनी बेटा? Object distance will be equal to u is equals to minus 50 divided by 7. Minus 50 divided by 7. Minus 50 divided by 7 कितना हो रहा बेटा? Minus 50 by 7 कितना हो रहा? 7.1. 7.1. 7.1 यानी minus 7.1 centimeters. This will be the answer. आई बात समझ में करने आ रहा अभी? सिंपल माइक्रोस्कोप का कुछ आइडिया आया अभी? एवरीवन यस सर. कुछ समझ में आया? Yes. Sir. थोड़ा फिर इस पे प्रैक्टिस कर लो, आराम से निकल जाता. कैन आई गो फॉर द नेक्स्ट माइक्रोस्कोप? चलिए, नेक्स्ट वन इज राइट नाउ फॉर मी व्हाट? कंपाउंड माइक्रोस्कोप. कंपाउंड माइक्रोस्कोप. सर प्रीवियस वन. सारा नबीला. हाँ बोलो बेटा, क्या हुआ प्रीवियस वन? उसने देखो उसने क्या बोला? an object is to be seen. An object is to be seen through a simple microscope of power 10 diopter. Where should the object be placed so as to produce the maximum angular magnification? Maximum angular magnification मतलब कौन सा पॉइंट? नियर पॉइंट की फार पॉइंट? नियर पॉइंट.
isn't it? So power दे रखा है 10 diopter, focal length is equals to 1 by p. p की वैल्यू दे रखी है 10, so 1 by 10 meters. meters को मैं सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो 1 meter will be equal to 100 centimeters. तो 100 डिवाइडेड बाय 10 डाल दिया तो 10 सेंटीमीटर आ गया. मुझे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है. इमेज डिस्टेंस उसने बोला कि इट इज एट द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, isn't it? क्योंकि मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन बोला ना, तो इमेज इज फॉर्म्ड एट -25 सेंटीमीटर. So I'm using the lens formula 1 by v minus 1 by u is equals to 1 by f. v की वैल्यू आ गई -25 माइनस ऑफ 1 by u is equals to 1 by 10. तो ये माइनस को इधर लेके चले गया तो प्लस हो गया, तो इसका एलसीएम कर लिया, तो आई एम गेटिंग द वैल्यू ऑफ u is equals to -50/7. क्लियर? नियर पॉइंट. वेरी गुड. क्लियर? चलिए नेक्स्ट वन बेटा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप. कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज लिटिल बिट एडवांस ऑफ योर माइक्रोस्कोप बेटा. वहां पर एक ही यूज कर रहे थे, यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे? दो यूज करेंगे, isn't it? One lens which is nearer to the object is called as of your objective lens. The lens which is nearer to the eyepiece, this will be nearer to the eye, that is called as of your eyepiece. This will be the principal axis. Everything above the principal axis is positive, isn't it? तो मान के चलो यहाँ पर कहीं पर अपने पास ऑब्जेक्ट है, that is nothing but A, and this one is of your B. So this का ऑप्टिकल सेंटर है, isn't it? तो रे ऑफ लाइट ये हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर ऐसा कुछ, और ये हो गया इसका अपर्चर ऐसा कुछ, isn't it? And this is nearer to the object, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस. This is called as objective lens, यानी focal length of objective, and this is nearer to the eye, so that is the reason this is called as of your eyepiece. So इसका focal length हो गया FE. ठीक है, अब इसका रे डायग्राम देखो, रे यहाँ से जाएगी, इसको लगेगी ऐसा, फिर रिफ्रैक्ट होगी तो यहाँ पर कहीं पर आएगी. A ray of light is passing through the center somewhere यहाँ पर, तो it is meeting somewhere यहाँ पर. इसका इमेज यहाँ पर बन गया, तो इसका इमेज बन गया यहाँ पर राइट नाउ. So this one is your A dash, this one is your B dash. This image is formed in the focus of your eyepiece और ये optical center. आ गया यहाँ तक सभी को? The lens which is nearer to the object is called as objective lens. The lens which is nearer to the eye is called as eyepiece. Focal length of the objective is represented by f0. Focal length of the eyepiece is represented by fe. And when the object is being kept, isn't it, in front of your convex lens, the image is being formed on the other side and it is inverted. Now this inverted image will act as of your, this will act as of your object for, this will act as of your object for your what? Eyepiece. तो ray of light ऐसा जाएगी इस पे से, तो यहाँ से रिफ्रैक्ट होगी यहाँ पर. The another ray of light will pass through the optical center ऐसा कुछ, और यहाँ पर कहीं पर आंख है, यहाँ से अब मैं इसको देख रहा हूँ. मुझे इसको ऐसा देखने पे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ, इट इज मीटिंग समवेयर हियर राइट. रफली ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि अभी तो हम लोग बोर्ड एग्जाम नहीं लिख रहे हैं, तो अपने को डायग्राम नीड से, तो मतलब इसका थियरी इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पर कहीं पर मीट कर रहा है, यानी ये हो गया मेरा फाइनल इमेज, दैट इज योर A डबल डैश, और ये हो गया B डबल डैश, और इसके साथ एक एंगल बना रहा है यहाँ पर. दिस एंगल इज नथिंग बट इक्वल टू योर बीटा, बिकॉज़ दिस इज योर इमेज ना, isn't it? ऑब्जेक्ट तो ऑलरेडी एंगल बना चुका है. दिस वन इज राइट नाउ फॉर मी और बीटा. अब बताओ बेटा, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, दिस इज योर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. राइट नाउ आई कैन राइट दैट वन एज ऑफ योर u0, और इसका इमेज यहाँ पर गिर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस बन गया मेरे पास v0. am I clear? Now this one is acting as of your uv. A dash B dash is acting as object for the eyepiece, so that I am representing it by your UV. और ये फाइनल इमेज यहाँ पर कहीं पर गिर रहा है, so this is your final image that will be equal to your VE. क्या क्लियर है सभी को? कुछ डाउट है डायग्राम में? Anyone? AB जो है ना, this AB is in front of the objective, so that is the reason I took it as of your objective distance U0. इसका image is been formed at A dash B dash, so image of the objective is represented by V0. तो यहाँ पर लिख रहा हूं मैं u0 is equals to object distance. u0 is equals to object distance. v0 is equals to image distance. Image distance.
from objective lens, object distance. Then UE is nothing but what, beta? Object distance per eyepiece, and VE is nothing but equal to what, beta? Image distance. This is your image distance per eyepiece. क्या यहाँ तक क्लियर है सभी को? कुछ डाउट? Am I audible? Yes, Yes, sir. sir. चलो, नंदिनी, are you able to follow? Yes, sir. चलो, तो अब इसका डायग्राम बताइए. अब देखो बेटा, अपने को मैग्निफिकेशन निकालना है. तो मैग्निफिकेशन निकालने के लिए मैंने क्या बोला था? बोलो, हर चीज के लिए फॉर्मूला बताया था मैंने. m is equals to बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा. Yes, sir. बाय डिफॉल्ट यही फॉर्मूला होगा ना सबके लिए. तो अब यहां से निकाल रहा हूं. देखो, अब यहां से देखो प्रॉब्लम. इस डायग्राम में देखो बेटा, इस डायग्राम में देखो, a डैश b डैश, वो tan बीटा will be equal to a डैश b डैश डिवाइडेड बाय uv. लिख सकता हूं क्या from this diagram? Yes, sir. Isn't it? So tan beta is equals to a dash b dash, and beta is very small, so beta will be equal to, beta is equals to a dash b dash divided by uv. क्या यहां तक क्लियर है सभी को? चलो, we can eliminate a dash b dash by using magnification of objective lens. चलो, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बताओ एक बार बेटा. मैग्निफिकेशन क्या होता है मेरे पास लेंस के लिए? m is equals to v by u. ये ऑब्जेक्ट के लिए, ये इमेज के ऑब्जेक्ट के लिए. m is equals to v नॉट by u नॉट लिख सकता हूं क्या मैं? Yes, sir. मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इज इक्वल्स टू v नॉट by u नॉट. मतलब साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट के लिए देखो बेटा, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, क्या ये ऑब्जेक्ट है? क्या ये इसका इमेज है? Yes, sir. दैट मींस मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? m इज इक्वल्स टू साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. मतलब a डैश b डैश डिवाइडेड बाय ab. ab इज नथिंग बट व्हाट? h नॉट. दैट इज इक्वल्स टू v नॉट डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ u नॉट विद साइन कन्वेंशन. And a dash b dash is down, minus sign. देखो, a dash b dash is below the principal axis, so negative. A and b is above the principal axis, positive. V naught is in the direction of light, positive. U naught is in the direction opposite to the light, go to A. U naught is negative. U naught is negative. V naught is positive. ठीक है ना? तो डेरिवेशन से मतलब नहीं है, बाद में टेंशन मतलब. तो यहाँ पर a डैश b डैश जो आएगा, ये माइनस माइनस चले जाएगा. सो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी? v नॉट h नॉट डिवाइडेड बाय u नॉट. ठीक है? तो देयरफॉर बीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी? बीटा इज इक्वल्स टू a डैश b डैश, यू सब्स्टिट्यूट दिस वन इन दिस वैल्यू. तो बीटा इज इक्वल्स टू व्हाट फॉर मी? v नॉट h नॉट डिवाइडेड बाय u नॉट इनटू uv. क्लियर? तो अब इसको लेके जाके इसमें डाल दीजिए मैग्निफिकेशन में. m इज इक्वल्स टू, बीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास v नॉट इंटू h नॉट डिवाइडेड बाय u नॉट इंटू योर uv डिवाइडेड बाय अल्फा. अल्फा की वैल्यू क्या होती है बेटा? h नॉट डिवाइडेड बाय कैपिटल D. Yes, sir. आया? कुछ कट रहा है क्या? h नॉट कट गया. तो मैग्निफिकेशन कितना हो गया? m इज इक्वल्स टू v नॉट डिवाइडेड बाय u नॉट इंटू, दिस विल बी इक्वल टू d डिवाइडेड बाय uv. क्या आ गया? कुछ डाउट किसी को?
मैग्निफिकेशन ऑफ योर कंपाउंड माइक्रोस्कोप कितना होता है? m इज इक्वल्स टू योर v नॉट u नॉट इंटू d बाई ue। अगर आप जरा ध्यान से देखोगे तो ये d बाई ue क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन। v naught u naught will be equal to magnification of objective. This will be the magnification of your simple microscope. तो क्या मैं मैग्निफिकेशन ऐसा भी लिख सकता हूं क्या? कैपिटल M is also equal to magnification of objective into magnification of eyepiece. आया? v naught u naught क्या है बेटा? m ही है ना? मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? Magnification of objective lens is represented by m naught or m v naught by u naught is magnification of objective. Am I clear? Am I clear? Yes, sir. फिर एक बार बोलो। मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप क्या था? देखो मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप क्या आया था अपने को? What was the magnification of a simple microscope derive करने के बाद? d by uv. d by uv is nothing but magnification of your eyepiece. उसके लिए दो केसेस करें अपन, नियर पॉइंट और फार पॉइंट। उसी तरह से कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए भी करना है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए मैग्निफिकेशन कितना आया मेरे पास? v naught u naught into d by uv. d by uv is nothing but what बेटा? सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन है, दिख रहा है? कब दिख रहा है? d by uv कब आएगा बताइए? सिंपल माइक्रोस्कोप का d by ue कब आएगा? When it is far point. Very good. So can I say that compound microscope में जो eyepiece है तो क्या ये इसका रोल क्या हो जाएगा? कोई बताएगा? It is the same role played by the simple microscope. सिंपल माइक्रोस्कोप जो रोल प्ले करेगा वही रोल ये eyepiece भी रोल प्ले करेगा। Am I clear? Yes, sir. चलो अब अपने को कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एग्जामिनेशन के लिए क्या याद रखना है? तो डेरिवेशन अपन ने कर लिया इन डिटेल में। m इज इक्वल्स टू v नॉट बाई u नॉट इंटू d बाई ue। क्या यहाँ तक क्लियर रहेगा सभी को? क्या याद रहेगा? केस नंबर 1 आप लोग करके बताइए। केस नंबर 1, केस नंबर 1 क्या होता है बेटा? नियर पॉइंट। केस नंबर 1 क्या होता है? नियर पॉइंट। व्हाट इज अदर नेम फॉर द नियर पॉइंट? मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, नहीं लिख रहा मैं फिर से। Isn't it? नियर पॉइंट मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ ue। हम लोग आईपीएस के लिए बात कर रहे हैं। इमेज इज फॉर्म्ड एट योर माइनस d, focal length will be equal to your plus of your fe, यानी 1 by v minus 1 by u is equals to 1 by f। 1 by v मतलब minus d minus u is equals to minus ue is equals to 1 by fe। Done? मतलब this will be 1 by minus d minus minus plus 1 by ue is equals to 1 by fe, यानी 1 by ue is equals to 1 by fe plus 1 by d। ये माइनस उधर चलेगा तो प्लस हो गया। क्या ये इससे पहले भी करे थे अपन? सेम आया था। ue वैल्यू विल बी इक्वल टू हाउ मच विल बी? fe into d divided by fe plus of your d। am I clear? Yes, sir. चलो अब मैग्निफिकेशन बताइए। m is equals to v naught divided by u naught into d divided by ue। कैसा है फॉर्मूला अपना? Yes, sir. तो 1 by ue की वैल्यू तो आ गई मेरे पास। ये वैल्यू लेकर के यहाँ पर डाल दो। m is equals to v naught divided by u naught into d multiplied with 1 by ue। 1 by ue मतलब 1 by fe plus 1 by d। मतलब मैग्निफिकेशन विल बी इक्वल टू v naught divided by u naught into, ये d से मल्टीप्लाई करोगे तो d by fe हो जाएगा, यहाँ प्लस 1 आएगा। Am I clear? Yes, sir. So magnification for near point for a compound microscope is m is equals to v naught by u naught into d by fe plus 1। या क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ? m is equals to v naught by u naught is magnification of objective into
1 प्लस डी बाई एफ ई, कोई प्रॉब्लम आया? नहीं आया? आया sir. मैग्निफिकेशन एट नियर पॉइंट फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला m is equals to v naught by u naught into d by fe plus 1, और m is equals to v naught by u naught को हम लोग m naught से भी लिख सकते हैं. What is m naught बेटा? Magnification of object. object. Magnification of object. आ गया आंसर? Am I clear? Any doubt? No. Next one. Length of tube. Length of tube. मतलब माइक्रोस्कोप का लेंथ. लेंथ कहां से आ रहा है देखो बताओ, एक बार डायग्राम देखो आप लोग. क्या मैं बोल सकता हूं लेंथ इज राइट नाउ फॉर मी, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है दैट इज द लेंथ. दिस लेंथ विल बी इक्वल टू दिस v नॉट प्लस मॉड ऑफ योर यूवी. क्या लिख सकता हूं मैं ऐसा? Yes sir. चलो, तो लेंथ ऑफ द ट्यूब अगर मैं पूछा तो क्या आंसर दोगे? L is equals to V naught plus UV. UV का फॉर्मूला क्या है? UV. L is equals to V naught plus UV का फॉर्मूला क्या है? FE into D divided by FE plus D. आ गया? लेंथ ऑफ द ट्यूब का फॉर्मूला इन द विच पोजीशन? नियर पॉइंट में. नियर पॉइंट में अगर लेंथ ऑफ द ट्यूब पूछा, लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप पूछा, तो L is equals to V naught plus UV. Am I clear? Yes sir. Any doubt? आ गया? बेटा आया नहीं. स्माइल. Yes sir. फॉर्मूलास क्लियर है? तो कितने एक फॉर्मूले बार देखो, मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए m फॉर्मूला, नियर पॉइंट फार पॉइंट. मैग्निफिकेशन ऑफ योर माइक्रोस्कोप के लिए बेसिक फॉर्मूला क्या है? m is equals to your v naught u naught into 1 plus d by fe. और v naught u naught को m naught भी लिख सकते हैं. लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं? नियर पॉइंट के लिए एक्चुअल मैग्निफिकेशन क्या है? जनरल मैग्निफिकेशन फॉर माइक्रोस्कोप इज v naught by u naught into d by uv. क्लियर है? yes sir. चलो, अब नेक्स्ट वन देख लिए. केस नंबर 2. व्हाट इज द केस नंबर 2? पावर पॉइंट. Yes sir. पावर पॉइंट का और एक नाम क्या है? Infinity. मिनिमम मैग्निफिकेशन. मिनिमम मैग्निफिकेशन. इसका अदर नाम क्या है? रिलैक्स्ड पोजीशन ऑफ आई. और एक नाम क्या है? Normal एडजस्टमेंट. ये दो में कोई भी टर्म यूज करें मतलब इमेज इज एट इंफिनिटी, यानी ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ यूई, इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, फोकल लेंथ विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ई. लेंस फॉर्मूला लगा लीजिए 1 by v minus 1 by u is equals to 1 by f. 1 by v is 1 by infinity minus this is minus of ue is equals to 1 by fe. ये प्लस ही आएगा, सॉरी माइनस माइनस प्लस है ये. 1 by ue is equals to 1 by fe, मतलब ue is equals to your fe. आया? Am I clear? तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था? m is equals to v naught by u naught. m is equals to v naught by u naught into d divided by uv था. अब uv की वाली क्या है? fe. तो मैग्निफिकेशन क्या बन गया? m is equals to v naught by u naught into d divided by fe.
At what position? At infinity position. Magnifying power when the image is formed at infinity is given by the formula m is equals to v naught by u naught into d by fe. Am I clear? Are bolo? Yes, sir. Yes, sir. What is the length of the tube? Anyone? Length of compound microscope. Length of compound microscope in far point. In far point. क्या होगा बताइए? Generally length का फॉर्मूला क्या है बेटा? L is equals to जनरल फॉर्मूला क्या है? L is equals to V naught plus mod of UE. ये फॉर्मूला है ना अपने पास? Yes, sir. UE की वैल्यू क्या है? FE के बराबर है. तो लेंथ कितना बन गया? L is equals to V naught plus FE. आ गया? दुआ करिए कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में इस वाले फॉर्मुलेस पे एक प्रॉब्लम आ जाए. 4 मार्क आ गया तो आराम से आप लोग करके आ सकते हो. फॉर्मुलेस क्लियर है सभी को? Yes, sir. कुछ डाउट? आ गया? सर जब अपन कंपाउंड माइक्रोस्कोप का नियर पॉइंट कर रहे तब U is not equal to FE, sir. U is not equal to FE. Object is kept in front of the compound microscope. सर लेंथ में नियर पॉइंट. लेंथ में क्या हो जाएगा? लेंथ में नियर पॉइंट में देखो, लेंथ में V नॉट प्लस UE है ना. लेंथ में UE की वैल्यू ये आई ना. जी सर. तो वो वैल्यू डाला मैंने अब. डन. ओके सर. चल. तो वन क्वेश्चन करो. A compound microscope. A compound microscope has magnification of 30. So the focal length of its eyepiece is 5 centimeter. So assuming the final image to be formed at least distance of distinct vision. Least distance of distinct vision. वो कितना होता है बेटा? 25 centimeters. Question is calculate the magnification. Calculate the magnification produced by the objective. क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ो बेटा सभी लोग. Sir, 5 centimeters. क्वेश्चन केयरफुली. पूछ क्या रहा है प्रॉब्लम में अपने को? We need the magnification produced by objective यानी m नॉट की वैल्यू चाहिए इसे. सर 5 सेंटीमीटर. कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला क्या है बेटा? m is equals to m नॉट into me. अब क्वेश्चन, कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज a magnification यानी कैपिटल M is equals to 30. Focal length of the eyepiece यानी FE is equal to how much for me? 5 centimeter.
Assuming the final image is to be formed at least distant of distinctive image, then calculate the magnification. You know that when it is formed at least distant of distinct vision, magnification का formula क्या होता है बेटा? M is equals to M naught into कितना होता है? 1 plus D by FE. Very good, Nandini. M की वैल्यू कितनी है बेटा? 30. M naught मुझे निकालना है 1 plus D value is 25. Focal length of eyepiece is 5. 5 ones are 5 5s are. P हो गया 30 is equals to M naught into 1 plus 5 is 6. M naught will be equal to how much for me? 30 divided by 6. तो कितना आया? 5 centimeter. 6 5s are 30. Done. मदिया फिरदौस, वेरी गुड. चलिए और एक क्वेश्चन कर लीजिए जल्दी से. आया सभी को क्वेश्चन? इस्माइल Yes, sir. आया नहीं आया? Yes, sir. चलो ट्राई करो और एक ट्राई करो. सारा नबीला, चलो वेरी गुड. और एक क्वेश्चन ट्राई करिए बेटा. ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप, नमक डालना बराबर है. compound microscope with an objective of 1.0 centimeter focal length and an eyepiece of 2.0 centimeter focal length has a tube length 20 centimeter. Stop. Calculate the magnifying power. Calculate the magnifying power. Calculate the magnifying power of the microscope. Magnifying power of the microscope. If the final image is formed at the near point of the eye. चलो ट्राई करें. पहले क्वेश्चन पढ़िए. A compound microscope with an objective of 1 centimeter focal length, यानी focal length of the objective is equals to 1.0 centimeter and eyepiece का focal length of your eyepiece is equals to 2.0 centimeter, has a tube length यानी capital is equals to 20 centimeter. Calculate the magnifying power of microscope. Capital M is equals to how much? When final image is formed at what? Near point. Near point के लिए फॉर्मूला क्या है बेटा? M is equals to V naught divided by U naught into 1 plus D by FE. तो लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप क्या होता है बेटा? इन द नियर पॉइंट V naught plus mod of your UV. Done. Yes, sir. तो क्या UV निकाल सकता हूं मैं? L दे रखा है 20 सेंटीमीटर. I can calculate the value of V naught. Calculate the magnifying power of the microscope if the final image is formed at your near point of your eye. Yani if I'm using the lens formula, 1 by V minus 1 by U is equals to 1 by F. V naught की वैल्यू क्या आएगी बेटा? Hmm? एटीन सेंटीमीटर नहीं आएगा बेटा 18 सेंटीमीटर.
V naught 18 आ रहा है. V naught. Final image is formed at your near point. Magnification of S1 will be equal to, objective will be equal to V naught divided by minus of U naught. And is size of image by size of object. And V naught will be equal to L. And U naught will be equal to F naught. Done. V naught is ये वाला. So 20 आ रहा है इसमें. अगर total length is equal to V naught, then the object must be kept at your focus. अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे रख दिए, U naught की वैल्यू अगर फोकस पे होगी, then the image will be the focus, इस पे फोकस पे पड़ेगा. That means this total length will be equal to your L. L will be equal to your 20. हाँ, L की वैल्यू 20 आ जाएगी बट length will be equal to 20. So 20 will be the answer. नहीं होता. चलिए. M is equals to V naught value is nothing but how much right now? L naught divided by F naught into 1 plus D by your FE. L naught की वैल्यू कितनी आ गई? 20 divided by focal length of the objective is right now 1 centimeter into 1 plus D की वैल्यू 25 divided by 2. Isn't it? So कितना आ रहा? This one is your 20 into this one is 1 plus 25 by 2. 25 by 2 कितना होता है? 12.5. कितना आ रहा? 1 plus 25 by 2. $270 टोटल. ये कितना आ रहा? 1 plus 25 by 2 कितना है? 13.5. 13.5. 20 into 13.5, 270. Done. सर एक बार फिर समझाइए. देखो M is equals to V naught by U naught into 1 plus D by FE. फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव दे रखा है, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस दे रखा है, लेंथ दे रखा है, मैग्निफिकेशन पूछ रहा है. तो M का फॉर्मूला हो गया V naught U naught divided by 1 plus D by FE. Isn't it? When the object is kept at the least distance of distinct vision for the near point, magnification of objective is equals to V naught by minus of U naught. That means that is equals to size of image by size of object. So V naught will be equal to your L
इफ ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट योर फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव, लेंस के अगर मैं फोकस पे रख दूं इसको, ऑब्जेक्ट को, इसका इमेज कहां पर पड़ेगा, टोटल लेंथ यानी इसके लेंस पे पड़ेगा, इसका टोटल जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा ना, v नॉट विल बी इक्वल टू l। तो v नॉट की जगह मैं l लिख रहा हूं और u नॉट की जगह मैं f नॉट लिख ले रहा हूं। When the final image is formed at the near point, v naught value will be equal to l naught and u naught value will be equal to your f naught। f naught की वैल्यू दे रखा है 1, l naught की वैल्यू दे रखा है फॉर मी 20, 1 प्लस d की वैल्यू दे रखा है 25 सेंटीमीटर, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ eyepiece is 2। सिंपलीफाई कर लो, दैट विल गिव मी द आंसर। डन? Yes, sir. और एक क्वेश्चन लिख लीजिए जल्दी से। A convex lens of focal length, ये आप लोग करके बताइए बेटा। A convex lens of focal length 5 centimeter, 5 centimeter is used as a simple microscope, is used as a simple microscope। Stop. What is its magnifying power? What is its magnifying power? Come on. If final image is formed at D, that means this distance of distinct vision. First of all, if it is used as an eyepiece, if it is used as an eyepiece in a compound microscope, in a compound microscope with objective of magnifying power of magnifying power 40, comma, what is the magnifying power of, what is the magnifying power of compound microscope, magnifying power of compound microscope। चलो बताइए जल्दी से, पहले वाला तो बता देना चाहिए था। वेरी गुड, 240। ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, कितना है फोकल लेंथ सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए? 5 सेंटीमीटर। मैग्नीफाइंग पावर इफ द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन, यानी m is equals to 1 plus d by f बेटा, फॉर अ सिंपल माइक्रोस्कोप इट इज 1 plus 25 divided by 5, तो कितना आ गया? 6। ठीक है ना? Yes, sir. दिस इज फॉर योर सिंपल माइक्रोस्कोप। अब उसके बाद उसने क्या बोला? इट इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्टिव इन ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप विद ऑब्जेक्टिव मैग्नीफाइंग पावर 40। व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप? यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए मैग्निफिकेशन ऑफ योर आईपीस इज गिवन हाउ मच फॉर मी 6। this is nothing but what? Magnification of eyepiece only, na, simple microscope. m naught is given as how much for me? 40. Is asking the magnifying power of compound microscope, यानी m is equals to m naught into m ही बोला था मैंने, 40 into 6, कितना? 240। डन? देखो ये कैपिटल M जो है ना, ये सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए होता है ना। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मैंने क्या बोला? मेरे पास दो लेंसेज होते हैं,
ये eyepiece will be acting as what beta for me? Simple microscope only ना. तो इसका मैग्निफिकेशन विल बी इक्वल टू मच फॉर मी, कैपिटल एम के बराबर हो जाएगा, यानी दैट विल बी इक्वल टू 6. हमें क्लियर? हमें क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट वाला चले, टेलीस्कोप. टेलीस्कोप क्या के लिए यूज करते हैं बेटा? Celestial bodies. Used to see distant objects clearly, isn't it? So first wala is refracting astronomical telescope. Astronomical मतलब this used to see heavenly bodies. Heavenly bodies मतलब stars, moon, sun वगैरह वगैरह. Done? मैं क्लियर? इसमें जो है ना ऑब्जेक्टिव इज वेरी लार्जर बेटा, यहां पर ये बात याद रखना है. ऑब्जेक्टिव लेंस इज लार्जर कंपेयर टू द आईपीस. ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, रफली ड्रॉ कर रहा हूं. रे ऑफ लाइट, अगर आप में मून देख रहे हो, ये मान के चलो इसका अपर्चर है और ये मान के चलो इसका अपर्चर. अब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप मतलब क्या करोगे? यू आर सीइंग दी हेवनली बॉडीज, यानी रे ऑफ लाइट आ रहे हैं यहां से, स्टार को देख रहे हो तो यहां से रे ऑफ लाइट इस तरह से आ रही. So this ray of light will be coming like this. Then और इसका इमेज फॉर्मेशन यहां पर कहीं पर होगा ऐसा कुछ. Then this one is your eyepiece. तो इसमें से रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगी और ये रिफ्रैक्ट हो गया ऐसा कुछ. अनदर रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगी and this one is being somewhere seen here, right? Then and this is your final image inverted. तो ये हो गया a dash b dash और ये हो गया a double dash और ये हो गया b double dash. यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, मान के चलो a और b. ये जो एंगल बनाएगा यहाँ पर, this angle is right now for me your alpha and this angle is nothing but your beta. Same formula. तो यहां पर ये जो डिस्टेंस होगा, दिस वन इज योर लेंथ, सो दिस विल बी इक्वल टू यूई. ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ये क्या बनेगा? दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस. फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इज मच ग्रेटर देन फोकल लेंथ ऑफ आईपीस. डन? अब बताओ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी इमेज कहां पर पड़ेगा बेटा? किसी को याद है? फोकस पे पड़ेगा, यानी v नॉट विल बी इक्वल टू योर f नॉट. देन व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी इमेज इज बीन फॉर्म्ड एट द फोकस. तो अब इसमें से tan अल्फा की वैल्यू बताइए. tan अल्फा इज इक्वल्स टू a डैश b डैश डिवाइडेड बाय f नॉट. tan बीटा इज इक्वल्स टू a dash b dash divided by uv. तो मैग्नीफाइंग पावर क्या हो गया बेटा? m is equals to tan alpha divided by tan beta. That means that will be equal to your tan beta by tan alpha. Tan beta divided by tan alpha. Tan बीटा डिवाइडेड बाय tan अल्फा. यही फॉर्मूला है ना?
tan बीटा मतलब a dash b dash divided by f naught multiplied by uv divided by a dash b dash. a वाला कट गया, तो मैग्निफिकेशन विल बी इक्वल टू, ये कितना आएगा बेटा? ओके, दिस इज योर a dash b dash divided by ue है ना ये, सॉरी, tan beta is equals to a dash b dash divided by uv into, this one is right now for me, f naught divided by a dash into your b dash. A wala gets cancelled, so this is your f naught divided by uv. So magnification will be equal to f naught divided by uv with negative sign. Why negative sign? Astronomical telescope में everything is been forming below the principal axis, तो इसीलिए हम लोग नेगेटिव साइन ले रहे हैं इसके लिए. Am I clear? Am I clear? Yes, sir. चलो अब इसके दो केसेस बनाइए जल्दी से. केस वन, केस वन के लिए कौन सा होता है बेटा? नियर पॉइंट. और केस टू फार पॉइंट. फार पॉइंट केस टू. डन. नियर पॉइंट के लिए 1 by ue की वैल्यू कितनी होती है? 1 by fe plus 1 by d, यानी m is equals to minus f naught into 1 by ue is equals to 1 by fe plus 1 by d. अब क्या करो, इसको आप fe से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करो, fe डिवाइडेड बाई fe, तो ये कितना बन जाएगा? m is equals to minus f naught डिवाइडेड बाई fe को बाहर निकाल लीजिए into this will be equal to 1 plus, ये कितना बन जाएगा? fe डिवाइडेड बाई कैपिटल D. आई बात समझ में? आई बात समझ में? देखो मैंने किया क्या है यहाँ पर, ये 1 by d को ना fe से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया मैंने. Am I clear? So magnification at near point will be equal to how much for me? Minus f naught divided by fe into 1 plus fe divided by d. Far point के लिए 1 by ue की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1 by fe. ऑलरेडी डिराइव किया मैंने. m is equals to minus f naught divided by fe. Clear? Yes, sir. चलो, लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप मतलब क्या लिखोगे बेटा? L is equals to, यहाँ पर क्या लिखोगे? f naught plus mod of your uv. डन. तो इस वाले केस में L is equals to f naught plus mod of your uv, यानी लेंथ will be equal to f naught into uv will be equal to how much बेटा? fe into d divided by fe plus d. इसमें L is equals to f naught divided by mod of your uv, यानी L will be equal to f naught plus fe. आया नियर पॉइंट के लिए, फार पॉइंट के लिए. Am I clear? Magnification for the telescope m is equals to minus f naught by uv. एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है ना बेटा, जान के मान के चलो सूरज को देख रहे हो या मून को देख रहे हो या स्टार को देख रहे हो, उल्टा भी पड़ा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको. तो एस्ट्रोनॉमिकल के लिए सब जगह अपने को नेगेटिव साइन आएगा. m is equals to minus of your f naught by fe, and length will be equal to f naught by your uv, और this is f naught plus of your mod of your uv. तो उसको सिंप्लीफाई कर रहे हो तो L is equals to f naught into fe into your d divided by fe plus d, और इसके लिए L is equals to f naught plus fe, जो पहले करा ना उसी तरह से, ज्यादा कुछ नहीं है बस. क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. चलो नेक्स्ट वन कौन सा माइक्रोस्कोप है? रिफ्रैक्टिंग टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप. टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप मतलब पाइनाप्लस, क्रिकेट मैच वगैरह देखने के लिए जो यूज करते हैं ना हम लोग, दैट आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल, यानी जमीन पे रहते चीजें देखने के लिए. Isn't it? Formulas are same as that of
formulas are same as that of astronomical. Just remove minus sign, remove negative sign, because we use erecting lens to make final image erect. रफली बोल रहा हूँ, ये वाला एक लेंस होता है और ये वाला आईपीस, इन दोनों के बीच में हम लोग एक एरेक्टिंग लेंस रखते हैं बेटा। एरेक्टिंग लेंस जो है ना, यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस होती है 2f और यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस होती है 2f. दिस डिस्टेंस इज ue and this distance will be equal to how much? v0. v0 मतलब this will be equal to f0. तो लेंथ will be equal to how much? ये जो होता है ना, this one is called as erecting lens. तो लेंथ will be equal to how much बेटा? f0 plus 2f plus 2f plus ue. यानी L will be equal to f0 plus 4f plus ue. ue will be equal to how much for me? fe. Done. रिफ्रैक्टिंग टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में अपने को इसमें जो फाइनल इमेज आया था ना बेटा, इसमें इन्वर्टेड आया था। इस इन्वर्टेड इमेज को हम लोग एरेक्ट करने के लिए हम लोग एक एरेक्टिंग लेंस ले रहे हैं इन बिटवीन देम, isn't it? और वो कितनी दूरी पे रख रहे हैं? 2f और 2f फ्रॉम द फोकस. So total length of the terrestrial telescope will be equal to how much or more? L is equals to v0 plus 2f plus 2f plus uv. Or I can write L is equals to v0 is equals to your f0 plus 4f plus fe. ये वाला कब यूज करेंगे? fe कब आएगा? फार पॉइंट के लिए, है कि नहीं? For far point ue will be equal to fe. Clear? चलिए डन बेटा। ये फॉर्मूले थोड़ा रिवीजन कर लिए बीच का। कल भी अगर मॉर्निंग हुआ तो आई ट्राई टू डू, और कल इवनिंग में हम लोग मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, डिफेक्ट्स वगैरह कर लेंगे। थोड़े लेंस मेकर्स फॉर्मूलेस, रिफ्रैक्शन, स्फेरिकल सरफेस का रिवीजन कर लेंगे। मॉर्निंग आप लोग ग्रैंड टेस्ट के लिए आ जाइए बेटा। मॉर्निंग 7 to 8 आई एम डूइंग ग्रैंड टेस्ट। वो टाइम पे आप लोग ग्रैंड टेस्ट के लिए रिवीजन पे आ जाइए। इवनिंग में कल हो जाने के बाद फिर एक बार मैं मॉडर्न फिजिक्स का एक बार पूरा फास्ट रिवीजन करूंगा बेटा। एंड उसके बाद ना आई एम ट्राइंग दैट एनी वन डे विल ट्राई टू मेक सम 150 to 200 best questions in the modern physics and heat and thermodynamics. We'll try to do them. Highly expected जो models होते हैं ना, वो बना रहा हूँ मैं। Maybe before the 30th, I'll be doing one session of the best 200 questions based on modern physics and heat and thermodynamics बेटा। Highly expected models on KTG, thermodynamics and dual nature, photoelectric effect वगैरह। ठीक है? सर हाँ बेटा। सर करंट इलेक्ट्रिसिटी में वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस के प्रॉब्लम्स रहते हैं सर। वो लेवल के नहीं आते बेटा, मैं करा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई स्टिल मेक यू टू डू, दैट्स नॉट एन इश्यू। अब तक तो इतने हाई लेवल के तो प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन अपना जनरली टीचिंग में बोलते हैं और रेगुलर टाइम में क्रैश कोर्स में मैंने इसलिए इंक्लूड नहीं किया कि अब वो बड़ा कॉन्सेप्ट बताना करना, और उसमें मैथमेटिक्स भी ज्यादा रहता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाना रहता, उतना टाइम कंज्यूमिंग प्रॉब्लम्स मेरे ख्याल से नहीं आना चाहिए था। ओके सर। ठीक है ना? चलो ओके, चलो टेक केयर बेटा, बाय। मॉर्निंग आइए बेटा जरा आप लोग। नंदिनी, Yes, sir. morning is 7 o'clock. You join better if it is possible. I'm doing the grand test in the early morning. Sir, actually, I'm even having my college, sir. So I'll go to कॉलेज नहीं college. हो गया अभी? कॉलेज तो हो गया शायद ना बेटा? आई विल नॉट कंप्लीटेड द स्टिल कॉलेज। वो उधर भी ग्रैंड टेस्ट चल रहा है सर। कितने बजे से?
वो सुबह होता है सर, मतलब फुल डे होता है सर अब कॉलेज 5:30 अच्छा तक। ठीक है, चलो मैं आपको एटलीस्ट पेपर भेज देता हूँ, आप एटलीस्ट नहीं तो एक बार फास्ट रिकॉर्डिंग तो भी देख लो मस्त, ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है सर। ओके चलो।